Hello, hello, Bacho. How are you? I hope you are finding this series interesting, and let's continue our journey for this one. Okay, so the last topic which we discussed in our part B was about the One Not One Hinduism series. Okay, now let's go into the one thing which is very important for us to understand is about फर्स्ट नोन सेटलमेंट ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन और कहाँ से इनको हिंदू का नाम पड़ा था। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो आज से ऑलमोस्ट लाइक कुछ 60-70 ईयर्स बैक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज इंडस रिवर। सो देयर इज अ इंडस रिवर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द हिमालयाज and that flows through the Jammu and Kashmir in India and goes into the West Pakistan, sorry, the West Punjab, which lies in Pakistan, and then that drains into the Arabian Sea, right? Just above Gujarat over here. If you see the white line, that is the Indus River. Indus River को हिंदी में सिंध सिंधु बोलते थे, ओके, सिंधु सिंधु नदी, ओके। अब अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें जितनी भी हैं ये चेनाब, रवि, बियास, झेलम, ये सारी जितनी भी रिवर्स हैं जो पंजाब, ईस्टर्न पंजाब की हैं, ये सारी जो रिवर्स हैं ये सारी ड्रेन होती हैं इंडस रिवर में, राइट। एंड इंडस रिवर जो था यहाँ पे पूरा एक सेटलमेंट था आज से ऑलमोस्ट लाइक 5000 ईयर्स बैक। द होल सेटलमेंट विच दे हैव दैट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है that was one of the most advanced civilization of the world at that point in time, and 10% of the whole world population used to live in the Indus Valley civilization. बहुत ही ज़्यादा advanced, technologically advanced, spiritually advanced, a very good civic sense was there at that time. It was a city, Mohenjo-daro and Harappa, right? इस कुछ विशेषताएं आपकी अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की उस समय, तो उनके जो ड्रेनेज सिस्टम थे those were so good, so impeccable, so scientifically made that even we and the modern age are not able to copy the same, the same sort of structure, like in terms of आज हमारे पास इतना scientific knowledge है, इतना advanced है हम लोग, लेकिन फिर भी we have borrowed lot of concepts of drainage from the Indus Valley people. They have a separate toilet in the houses. They have the very straight roads. It's like a highway, so that those are get cleaned up by the wind, by the air itself. So all those things like the engineering, the civil engineering marvel which they have seen in the Indus Valley, that is not to be found in any other civilization, whether it is Greece or whether it is Mesopotamia, the Iranian, or you talked about the Chinese civilization. No. Anyways, why it is important and why we have brought this topic up for our discussion is that यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हीं को फर्स्ट नोन सेटलमेंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन बोला गया। उसका रीजन ये था कि जो लोग पर्सिया से जो लोग आए थे, पर्सिया मीन्स ईरान, द प्रेजेंट डे ईरान, वो लोग ने अटैक किया था ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। दोज पीपल, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये जो रिवर है इसका नाम सिंधु, हिंदी में सिंधु बोलते थे, तो वो पर्सिया में एस को एस नहीं प्रोनाउंस करते, एच प्रोनाउंस करते हैं, तो वो सिंधु से हिंदू बन गया। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे उनको वो हिंदू बोलने लगे, राइट। जो पीपल हु लिव यूज्ड टू लिव on the banks or nearby 100-200 किलोमीटर्स on by the main river, right, उनको लोग हिंदू बोलने लगे। और इस वर्ड को और पॉपुलराइज किया ब्रिटिश ने। British came to know when they came to rule India, they called the people who followed the Vedas or who were the people of that time, they called Hindus. Okay, and that's how we are came to be known as Hindu. Okay, which brings us to our next topic, which is what does word Hindu mean? Okay, so Hindu word came from Sindhu, coined by Persians. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सिंधु रिवर से हम लोग का हिंदू नाम पड़ गया। Okay, then word sticks and further popularized by British and Europeans, and no such word is found or referred to in वेद और पुराण में हमको हिंदू नहीं बोला, हमारा कोई ऐसा वर्ड नहीं आया। जो एक वर्ड जिससे हम लोग लाइक हिंदूज दे वांट टू बी रेफर्ड एज by others is Sanatan Dharma. Okay, we'll talk about more. Okay, so what is Sanatan Dharma?
अब इसमें अगर आप देखोगे बेटा तो सनातन मीन्स समथिंग विच इज ऑलवेज देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड इज परमानेंट इन नेचर, विच मीन्स टू से दैट, जैसे कि मैंने एक टॉपिक का पहले भी आपसे बात किया था पार्ट बी में, कि जब कोई भी रिलीजन नहीं था, और रिलीजन तो छोड़िए, जब रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस वर्ल्ड में, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन द ऑन द अर्थ फॉर ऑलमोस्ट लाइक 200,000 ईयर्स, लाइक 2 लाख साल से रह रहे हैं। लेकिन हमारे जितने भी रिलीजन्स आए हैं, बस ये पिछले आप समझ लो 5,000 6,000 साल से ही हैं। उसके पहले भी लोग थे, उसके पहले भी सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशंस थे, बट रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय जो लोग थे वो, जब हम रिलीजन का कॉन्सेप्ट हटा देते तो जो बचता है वो बचता है सनातन धर्म। इसीलिए हिंदुज्म में कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। इसीलिए हम लोग ये नहीं कहते, हम लोग के अंदर कोई हिंदुज्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदुज्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऑफ हेल और ऑफ हेवन का। It's because we do not want to scare people in name of religion. We do not say that अगर आपने बाइबल को नहीं माना तो आप हेल में जाओगे। मतलब यहाँ तक कि बाइबल में बोलते हैं कि आपके सारे सिंस माफ हैं if you do believe in Bible, right? That's what is being said in Bible. It's there in Christianity, which means that if you do not believe in Bible, you are going to go into hell, even if you are a very pious man, right? लेकिन हमारे अगर आप हिंदुज़्म में देखोगे तो हमने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप वेद में बिलीव करें, आप वेद के सबसे बड़े ज्ञाता हो या आपको वेद से कोई लेना देना ना हो, यू आर स्टिल अ हिंदू। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, यू आर स्टिल अ हिंदू, राइट? फिर धर्मा, फिर सनातन के बाद आता है धर्मा। तो धर्मा क्या होता है बेटा? धर्मा ये होता है, जैसे हर ह्यूमन बीइंग का या हर एक सेक्ट का एक धर्म होता है। जैसे कि हमारे जो बॉर्डर्स में जो सोल्जर्स होते हैं, जो फाइटिंग करते हैं, जो दूसरे देश से लोगों को रोकते हैं हमारे अपने देश में आने से, और हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, द सोल्जर्स, उनका ये धर्म है। वो अपना धर्म का निर्वाह करते हैं। या जैसे कि डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, वो लोगों को केयर करते हैं, लोगों को दवाई देते हैं, उनको स्वस्थ रखते हैं, राइट? या टीचर्स, टीचर्स का धर्म होता है बच्चों को पढ़ाना, उनको नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करना फॉर द कंट्री, फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री, राइट? तो ये और जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या आपके कोई भी जानने वाले हों या खुद आप हो, आप सबका एक धर्म है। जैसे बच्चों का धर्म क्या है? बच्चों का धर्म है अच्छे से पढ़ाई करना फॉर एग्जाम्पल, और खेलना और एंजॉय करना, वो भी एक पार्ट ऑफ उनका काम है, वो ये उनका धर्म है, उनको अच्छे से पढ़ाई करना और उनको चीज़ों को अपने गुरुओं से, पेरेंट्स से ग्रहण करना है, ओके? तो जो धर्म होता है वो एक सोसाइटी को बांध के रखता है, एक सोशल हार्मनी और इंटीग्रेशन देता है। तो सनातन धर्म का मतलब हुआ एक वो अ, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसका कि पालन हमेशा से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। एंड हिंदुज्म इज ऑल्सो नोन एज अ वे ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने पहले बोला था, बिकॉज एक ये अम्ब्रेला है जो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को जगह देता है अपने अंदर ही समाहित होने के लिए, राइट? और कोई भी पर्सन अपनी ही जिंदगी में रहते हुए उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो अपने ही जिंदगी में जैसे वो रह रहा है वो रहता रहे, वो फिर भी हिंदू है, right? So there is no need for you to change your lifestyle to become a Hindu, or to be not to be thrown out by the Hindu limit, right? So everybody is welcome, everybody is a Hindu, right? So that is why it is a way of life. ओके, अब बेटा हम जल्दी से हम लोग इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं, विच इज हिंदू स्क्रिप्चर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, सो आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देना। हिंदू स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स जिनकी हम बात करते हैं, उनमें से दो मेन कैटेगरी होती हैं, श्रुति और स्मृति, ओके? तो जो श्रुति होती है और जो स्मृति होती है, आप ऐसे समझो कि जब पुराने ज़माने में जब बच्चे लोग जाते थे पढ़ने जाते थे, मैं बात आप कर लीजिए 2000 ईयर्स पीछे की, तो वो लोग कैसे करते थे? 3000 ईयर्स बैक, 4000 ईयर्स बैक, वो कैसे पढ़ते थे, राइट? उस समय तो कोई पेपर पेन कोई टैबलेट या लैपटॉप कुछ भी नहीं था, राइट? तो उस समय क्या कैसे नॉलेज डिपार्ट की जाती थी? जो जो उनके गुरु होते थे वो लोग गुरुकुल जाते थे, अपना घर छोड़ के वो गुरुकुल जाते थे। वहाँ के जो गुरु होते थे वो बच्चों को ज्ञान देते थे, वो उनको बताते थे, राइट? तो वो जो बताते थे, वो जो बोलते थे और जो बच्चे सुनते थे उसको बोलते थे श्रुति। श्रुति मतलब जो सुना जाए, श्रुति का लिटरल मीनिंग होता है टू हियर, राइट? So like for example, I am speaking and you are hearing right now. So what you are doing, you are shruting.
यू आर श्रुति, लाइक आप उसको सुन रहे हो। और स्मृति का मतलब होता है याद रखना। तो जो बच्चे वो सुनते थे, जो उनके गुरु बोलते थे, वो उसको याद भी रखते थे, और याद रखने के तरीके अलग थे। से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप नोट नहीं बना सकते थे, तो आपके तरीके अलग होंगे उसको याद रखने के। तो वो कहानियों के थ्रू, पुराणों के थ्रू, वो इतिहास के थ्रू, महाभारत और रामायण की गाथाओं के थ्रू वो उसको याद रखते थे। ओके। और हमारी जो मेन जो बुक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो वेद है। वेद which encapsulates all the human knowledge within itself, all the human knowledge। मतलब एक भी आप ह्यूमैनिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो वेद में डिस्कस ना हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिलोसफी से रिलेटेड हो, राइट। तो वेद जो है वो टू लेवल ऑफ ट्रुथ थे। एट वन लेवल ऑफ ट्रुथ जहाँ पे आप विच इज देयर फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड द वेद्स and apply the rituals in their religious practices on every day. And the second level of truth is for the enlightened person, or for the person who is not happy with the first level of truth। For example, अगर आप रोज मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, अपना घर अपना 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 काम कर रहे हैं, जैसे कि 99% लोग करते हैं, और उससे अगर आप खुश हैं तो यू आर हैप्पी। बट फॉर अदर पीपल, फॉर 1 or 2% ऑफ द पीपल हु वांट more exact knowledge on the nature of Brahma, on the nature of God, उनके लिए वो हाई लेवल ऑफ जो फिलोसफी है, दैट इज नथिंग बट दैट इज वेदांत। द एंड पार्ट ऑफ द वेद इज नोन एज वेदांत, विच इज उपनिषद। इन उपनिषद में ये पूरा मैटर डिस्कस किया गया है, राइट, विच इज नोन एज द वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो जो वेद हैं वो चार तरह के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इन 4 वेद में सारा जो भी नॉलेज है वो दिया गया है। ओके। एंड देन वी हैव स्मृतिज which has इतिहास, which means the historical fact, which has Ramayana and Mahabharata, and Bhagavad Gita is part of Mahabharata, where Lord Krishna gives the knowledge to Arjuna to show him the um, real word, right? Not as the word which he was interpreting, right? So that is a Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita has only like 700 verses out of 100,000 verses of Mahabharata. So it's a relatively a small part of Mahabharata itself. Then we have Dharma Shastra, we have Manu Smriti, Narada Smriti, Vishnu Smriti, and other Smritis, and we have Darshans, we have Upaved, right? And then we have Puran, which the most important Puran is the Bhagavad Puran. Then we have Matsya Puran, Shiv Mahapuran, Markandeya Puran, and so on and so forth. And then we have Agam, which is for different sect of people following the religion, which is Vaishnav, Shiv, and Shakti. Okay, all the 3 schools. फिर बेटा ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए पिक किया था। तो जो पहला फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो इस समय, दैट इज द केव पेंटिंग विच वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया in between when you go to Bhopal, from Nagpur to Bhopal, on the way you will have these Bhimketu caves. Okay, Bhimketa caves, and these paintings are driven by people who live in these caves some around 15,000 years ago, and they depict their lifestyle, their way of living in the caves through the paintings. So that's a very important discovery which happened in India. And then we have the statue of Shiva, which you can find in multiple places of India, and is the most revered god, most worshipped god in India as well. So I think this is from Bangalore. And the next photograph which you see, this is the Hindu festival of Onam being celebrated in Kerala. And people and these ladies, as you see over there, they are cooking the uh, milk with the rice. What we say is kheer, right? Which is a very favorite part of the food which has to be eaten of, in the harvest season. Okay, so this one is where the ladies are worshipping to the river Ganga, and there's a priest who is helping them do the puja. And these are the little girls who are celebrating the festival of Holi. Seems like they are from West Bengal, right? And the next photograph which you see is a statue of Gautam Buddha, which is
which is I believe is from some temple in India. I'm not very sure which it is. And the next one, which is we have over here, is the photo of Lord Vishnu with Lakshmi and other gods. And this is the photo of a temple in Singapore. Okay. Okay. So what we have done online classes is that we have gone through this story of the Vaman Avatar. So the Vaman Avatar is the story of Lord Vishnu, and when Lord Vishnu has taken the avatar of Vaman. So Vaman literally means the small man, right? And the story goes like this: that uh, there was a very powerful and strong Datyaraj by the name of Bali, and he has become so much powerful that he has taken all the three lokas, the Bhulok, the Swargalok, and the Narklok as well, the Patal Lok, what we say, in his influence, right? So he was the sole ruler of that place, and. And when Indra Bhagwan, the Indra became very frightened, and he went there and he requested Lord Vishnu that, hey Bhagwan, please save us from Bali, because Bali is taking over one loka after another loka and is becoming very very powerful, because done a lot of tapasya and penance. Okay, so Lord Vishnu has said, just give me a moment, sorry. Yeah. Then Lord Vishnu assured Lord Indra that yes, I will take care of the situation, and he went to and he took an incarnation of Vaman, the Vaman avatar, and he went where Bali was doing the sacrifices. He was worshipping, doing the yagna of to increase his power. And when he saw the woman, the little Brahman boy, Bali said that, "Oh, little Brahman boy, what do you want? How can I help you?" Because it was a tradition that whenever a Brahman person comes to your doorsteps, you have to give some offering to that person, right? That is our tradition. So the little boy went into the kingdom of Bali, and he said that, "Oh Lord Bali, you are such a great king. You are the owner of all the lokas. Can you give me only three? Uh, like I would, he had a small feet, and he said that if I walk on the ground just three footsteps, can you give me only that much land, which I can walk by my three steps?" And everybody started laughing on the Lord, and they said that, "What is this little boy asking? Like, this is such a small thing for the owner of the person from Bali. He owns all the three lokas after all." So Bali said that, "Boy, please ask something bigger, right? What you are asking is too small. Only 3 footsteps, and that's it, right? I mean, that's too small, right? I mean, you have the freedom, the liberty to ask something. You can ask the jewelries, you can ask the cows, or the big piece of land for yourself." He said, "No, that's what all I want. If you can give it to me, uh, mm, I would be very happy." So Bali said, "Yes, I will give it to you," right? And then you will see in this video, like I would encourage you to go to YouTube and watch a video on the Vamana avatar, Vishnu Vamana avatar. It is his fifth avatar, and what happens afterwards. I'll leave it to you. I will not reveal the secret what happened afterward. I'll leave it to you. So go into the YouTube and find out for yourself what happened after that. Okay. So with that one, we have come to an end to our meeting for today. These are the topics which I want to discuss as we go forward, which are the Hindu gods and their significance, right? Where do they, uh, why are they worshipped? What is their power, and so on and so forth? The Hindu temples and their significance, all the main temples which we have in India. Hindu pilgrimage, introduction to 12 Jyotirlinga and 18 Shakti Peeth, the Hindu sacred text, hymns, and epics. We can talk about Ramayana, Mahabharata. What are the learnings from those? Then Hindu rites and rituals. It means yagna, mantra, all those things. Main mantra and their meaning.
Yantra and their significance, like the geometric patterns which we draw and we worship them. Hindu festival and their significance, like Holi, Deepavali, Navratri, right? What is their significance? Why it is made? Why do we celebrate it? What is the story behind that? Then ancient Hindu discoveries and inventions, and why is it that our scientists, our rishis, they have given such a great contribution to astrology, to mathematics, to science, to the world, and what is it, that we have contributed in the world knowledge. And Hindu social reformers, and we talk about the prominent enlightened sages, the rishis, and their life story. Okay, so that's the plan, which is coming up in the forthcoming our second meet, which is scheduled for January 9th, 2022. I hope that you all can now attend our gathering in person, because you would get the opportunity to ask the question. It would be very interactive session, and I really look forward to that discussion with you. So with that, namaste and be happy, and bye bye. Take care of yourself. Meet you very soon. Bye bye.